See, learning is all about fun and learning, okay? You can't be learning if you can't have fun. The song is too heavy for you all. You can check this album out. 30 songs in the album. What? 5 or 6 are good. Bangers. 5-6 bangers. You can check it out. I Am Music by Playboy Carti out right now. It's a good album. Not a good album, good songs here and there. So, execution context. What is the execution context? Before getting into execution context, let's just go into the JavaScript engine itself. आज JavaScript engine को खोल के रख देंगे. वो तुमने देखा होगा ना कि गैराजेस में गाड़ियाँ खुली रखी होती हैं, सीट यहाँ है, ये है. आज JavaScript खोल देंगे भाई. आज खोल देंगे JavaScript को. ठीक है. चलो. Before getting into the execution context, let's understand the JS engine first. JS engine क्या है भाई? What is the JS engine? JS engine is solely responsible for running JavaScript. But is the JS engine enough to run the code? No. Why do I feel like Akshay Saini right now? Whatever. So what is the JS engine? I'm so intense right now. Yes. So what is the JS engine? It is the actual engine which is running. Like the motor in your car. You have a motor in your car, right? Or engine in your car, right? So that is what is running the car. But can just with the engine the car run? No, it needs an environment. It needs an environment, and that environment needs to encapsulate a lot of things for the car to run, for you to drive, for you to for gedi marne ke liye, so it needs to encapsulate a lot of things together. But the heart and the soul is still the engine. The heart and soul is still the engine. So JavaScript engine is the heart and soul, but it needs a runtime. It needs this, it needs that, it might need this there to facilitate for the program to run correctly, efficiently, for you to really establish whatever you wanted when you wrote the code in the first place. Okay? So let's get into the JS engine. Code execution lifestyle. Ooh, this is heavy. So, गाड़ी में क्या होता है? चाबी डाली, किया, चल गई. आपने क्या किया? Node index.js, चाबी डाली, कोड चल गया. अगर आप उतने में ही खुश हो, then leave this video right now, because we are going to चाबी खोल देंगे, गाड़ी खोल देंगे. What happens is, when you write node index.js or whenever you give a command to execute the application, what happens really is it's not a compiled language. So you might have observed in Java, C++ or your typical compiled languages, your language source code is built into a machine code first. Your language source code is first of all compiled. It is built into a compiled machine code. And this machine code is portable. You can take this machine code, execute it 1 year after, 2 months after, right now also. But there is one step before execution. You need to build it and you need to have it in a machine code such that it can execute. It has its advantages. What? Since it's already compiled, it's faster, it's more efficient, and any of the syntactical errors that you have, you will get to know at compile time itself. Such that when you run, you are कि चलो भाई compile errors तो नहीं आएंगी, कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो देख लेंगे ना, but at least syntactical errors will not be there. So it gives you some comfort. It has some rules. JavaScript was like the rebel. I have my own sets of rules, bro. You play with my rules or you get out. So JavaScript was like, I am not going to be a compiled language because I'm being used in the browser. So browser mein I don't want ki, when the server sends the JS files, I'm first compiling it, and then maybe I'm generating the machine code and then I am executing it. No, the user experience, he wants the websites to load fast. Aajkal to bhai, the user experience is king, right? A lot of modern websites, modern engines. So
That's what the philosophy was of JS, and that's what was reflected in the design of when JS was being drafted. It needs faster startup speed. So what they were like, okay, we will not compile it first. We will not compile it. What we will do is we'll do a series of steps. We'll do a series of steps. Okay. So what is the first step? Before even executing a single line of code, यहाँ से things will get a little heavy. Just breathe with me and try to observe. Before even executing a single line of code, JS will do a quick scan, a quick look through. जैसे हम क्या करते हैं, किताब लेते हैं तो पहले उसका पीछे का पढ़ेंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे, किताब को इधर उधर देखेंगे, है ना, किताब बाद में पढ़ते हैं. So that is exactly what JS will do with your code. It will just give a quick scan. It will do a quick scan with your code. While it is doing that quick look through, what it is doing, it is forming a mental model. It is creating an abstract syntax tree. What? भाई ये क्या बोल दिया? अबे ये nothing fancy. Just stay with me. As it is scanning through your code, what it is doing, it is parsing your code. What is parsing your code? Breaking down your lexical breaking down your code into tokens. It's called lexifying or something. Identifying the let keyword, const keyword. अच्छा यहाँ function है, यहाँ variable है, यहाँ पर ये है. तो हमने तो अपने हिसाब से कोड लिख दिया. But what the JS engine wants is, I want to make a data structure where I am able to figure out कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है. It does a quick look through of your code. It makes a data structure. It makes a data structure where it will be like, अच्छा, this variable is here, this is a function. So it is making an abstract syntax tree. This is the first thing that the engine will do before even running a single line of code. Before even running a single line of code, I am again repeating, the JS engine will create an abstract syntax tree. What is it? It's just a data structure that the JS engine creates after splitting your code. It splits your code into tokens, let, const, function. क्या क्या है कोड में बताओ, मैं एक जल्दी से एक ट्री बना लेता हूँ, मैप बना लेता हूँ. That is what it is. इसका क्या फायदा है? We'll get into it. One more thing is that since your JavaScript code can be very large, I'm not talking about one script file, two script files, three script files. In real world application, you have modules, you have separate folders, you have many dependencies. So creating an abstract syntax tree of your entire project is very tiresome. It will take a lot of time. So it will defeat the purpose of the fast startup time that you wanted. Correct? If you have to create an abstract syntax tree of the entire thing only, it will take a lot of time, man. It's right. So what it does is, it does lazy parsing. Stay with me. It does lazy parsing. It will not create the whole abstract syntax tree. It will still create, but it will create a very lightweight version of your abstract syntax tree. Globally, it will see कि अच्छा भाई यहाँ पर थोड़े चीज़ें हैं, but इसने ये फंक्शन बनाया पर एग्जीक्यूट नहीं किया. Let's not include that into the AST. This is very nested. Let's not include it just right now. Maybe we'll do it later. So a very lightweight AST it will create. It will create a very lightweight AST. Let's also look at the nodes. Okay, I know what's going on. It will create a very lightweight AST, and then the V8 engine will transform this lightweight AST. It will transform this lightweight AST into bytecode or an IR, intermediate something. Let's see what it exactly is. So during this process, lexing is being performed, turning raw text into tokens. What are tokens? Keywords, operators, identifiers, etc. And parsing, turning these tokens into the abstract syntax tree. भाई खोल के देख लेते हैं कि ये abstract syntax tree है क्या. बहुत बार सुन लिया. It's a data structure where the JS engine splits your code, stores them into meaningful pieces. JS engine can understand the AST better than it can understand your source code, right? So for example, you have a line like this, const x equals to 23. Looks very harmless, right? But oh my god, look at the tree it created for this, that.
This is the abstract syntax tree for just this line. So imagine for a huge code base, the AST itself will become so large and complicated. We don't want that. We want a lightweight AST. Okay. So exactly what I told you. So modern JS engines, however, do not parse your entire code into a big AST. No. They do lazy parsing and create a partial AST. You might have created functions which are never executed, hence are not included in the AST. Okay, lightweight AST. Next, V8 transforms the AST and creates a unoptimized baseline code which can either be a bytecode or simple machine code from AST. ये क्या पढ़ लिया? It is just an intermediate representation of unoptimized code generated by V8. What it is doing is, the engine is not at all considered about optimizing it right now. अगर optimize ही करना होता तो वो ढंग से पूरा AST पूरा बना लेता. इसका मेन अभी क्या है, फटाफट मुझे शुरू करना है. Lightweight AST बनाया, and what it will do is, it will take the so lightweight AST and transform into an intermediate representation. अच्छा, what is an intermediate representation? Let's break things down. What is an intermediate representation? ये क्या term है? Think it like this. On one end of the spectrum, you have your source code. The other end of the spectrum is your machine code. Your source code, the JavaScript code, is not executable by machines. This machine code is executable, but it needs to be compiled. JS does not compile. What it will do is, यहाँ बीच का कुछ करेगा वो. JS source code लिया, created into an abstract syntax tree, and इस tree को लेकर के it will create a bytecode. The bytecode is not exactly the machine code, but it is more machine level than your source code. This bytecode is not optimized, but it is still machine executable. It is not fast optimized as your low level machine code, but it is still not your source code. It is a beach में thing which is still executable by machines. That is why it is called an intermediate representation of ठीक है. And this, since it's a bytecode and this is generated by the Ignition something, Ignition क्या है इन लोगों का? They have an Ignition engine. They have an Ignition engine which creates creates the this bytecode. That's why we call it the Ignition bytecode. Bytecode is simpler, more compact than raw AST. It's machine code, na, kind of a machine code, na, so it's more compact. It's not optimized. Don't think it's optimized. It's more optimized than the AST, obviously, but not machine code. कैसा लग रहा है भाई? Phase 1 खत्म. So this was the phase 1. Life cycle का phase 1 खत्म. थोड़ा heavy हो गया. हाँ, want some deep breaths. This बहुत simple है यार. I know it might not be coming naturally to you. It might be coming naturally to you. But एक दो बार देखोगे करोगे हो जाएगा. Is it time for another break? Is it time for another one of my कोई अच्छा गाना है क्या? MIA, Mamma Mia. Ha. Swagged out. Backed out. चलो भाई, एनर्जी बूस्ट मिल गया है. नाउ वी कैन कंटिन्यू विद फेज 2. फेज 2 मेरा दोस्त रहता है डीलर फेज 2 में. Phase 2 is all about what we will do next with the Ignition bytecode that we just created. एक intermediate हमने बना लिया है bytecode, but what now? अब इसका क्या करें? इसको execute करो ना भाई. इसको execute कर देंगे हम. हमारा काम था जल्दी जल्दी फटाक से execute करना. हमने एक mid tier bytecode बना दिया तो execute करो. अब execute कैसे होगा? I told you guys that गाड़ी को चलने के लिए सिर्फ इंजन नहीं चाहिए. इट नीड्स अ रन टाइम. इंजन भी चाहिए, ये भी चाहिए, गियर भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए. तो द Node.js ecosystem और योर ब्राउजर इकोसिस्टम. सो देर आर 2 ecosystems और मे बी मोर द JS कैन रन. या तो आप ब्राउजर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है क्लाइंट साइड में, या फिर वो लोकली Node.js में एग्जीक्यूट हो रहा है.
तो बोथ ऑफ दीज गिव सम टूल्स इन द रन टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल इस रन टाइम में द V8 इंजन ऑल्सो हैज़ टर्बो इंजन और समथिंग लाइक दैट विच विल टॉक अबाउट लेटर. बट V8 इंजन क्या करता है, as soon as it is presented with this byte code, उसके अंदर की जो C++ रूटीन्स है, इट विल टेल इट एग्जीक्यूट करना शुरू करो. कोड एग्जीक्यूशन करना शुरू किया जाए. नाउ इट विल स्टार्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूटिंग अर कोड सिंगल थ्रेडेडली. JS इंजन इज सिंगल थ्रेडेड. ये जो भी कोड एग्जीक्यूशन चल रहा है वो JS थ्रेड देख रहा है, तो इट इज सिंगल थ्रेडेड. आपका AST बन गया, आपका बाइट कोड बन गया. अब वो एक एक लाइन बाय लाइन जो है आपका वो एग्जीक्यूट हो रहा है यूजिंग द इंटरनल C++ routines. Let's see it. The V8 engine is something known as the ignition interpreter which will run this byte code. The only thing is left is running. This allows our program to start quickly due to the minimal processing being performed. ना तो हमने इतना बड़ा AST बनाया, AST भी लाइट वेट बनाया है, और उसके बाद बाइट कोड भी हमने अनऑप्टिमाइज बनाया, इतना ऑप्टिमाइज नहीं है. ठीक है. The JS engine is literally reading each byte code instruction, dispatching it to the underlying C++ routines which carry out the operations. At this point, your code is running, but it is not highly optimized yet. Hence the quick start. चल रहा है, ऑप्टिमाइज नहीं है. वो कहते हैं ना कि गाड़ी चल गई है, खच 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 चल गई है, पर एकदम ये माइलेज नहीं पकड़ी है, एकदम तेज से एकदम आगे नहीं बढ़ी है, पर चल गई है. So naturally, we are not creating a high performant AST at once. It's more interpret as we go. So why is JS being referred to as an interpreted language? Due to this. हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं. पहले हम उसका लेक्सिकल स्ट्रक्चर देख के पार्स करके AST इंटरप्रेट कर रहे थे. AST से हमने बाइट कोड इंटरप्रेट किया है, अब बाइट कोड से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो वी आर इंटरप्रेटिंग ऑन द फ्लाई, हेंस द नेम की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. Phase 3 is what led to JS being up to the standards. यार आज की डेट में सबको स्पीड चाहिए. Everybody wants speed. So the thing is, modern engines or modern browsers, they are able to execute at a very high speed. Not as fast as your compiled languages, statically typed languages, obviously, because they are compiled languages. But still, it is not that far behind. It is definitely not that far behind. Because why? The developers have done some clever, crazy, smart optimizations and have very some nuances are there which will increase the speed. Now, what are these nuances? I told you that the JS runtimes comes bundled with some things. So understand it like this. I am the JS engine. I have one thread. I am executing one line. ठीक है? Who is optimizing? बिकॉज मेरी तो पूरी थ्रेड, मेरा पूरा दिमाग जो है कोड एग्जीक्यूट करने में लग रहा है. मेरे पास तो ऑप्टिमाइज करने का टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो थ्रेड ही नहीं है ऑप्टिमाइज करने के लिए. सो बट द रन टाइम इज लाइक, मेरे पास आ जाओ बच्चा, मैं तुम्हें थ्रेड्स दूंगा. There is a separate engine which the Node.js or your browser bundles with, which as your code is running, जैसे आपका कोड रन कर रहा है, साइड में एक इंजन है जो आपके कोड बेस से डायनेमिकली इंटरैक्ट कर रहा है. दिस इज ब्यूटिफुल. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आपका मेन जावास्क्रिप्ट का इंजन जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वो तो ठीक है, बट देयर इज एन इंजन एट द साइड विच इज इंटरैक्टिंग विद योर कोड एट द सेम टाइम. इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग योर कोड, नो, इट इज इंटरैक्टिंग विद योर कोड. वाई? टू ऑप्टिमाइज. हाउ? इट इज एबल टू इंटेलिजेंटली कीप ट्रैक कि भाई इस कोड बेस में ये कुछ जगहें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं. इस वेब पेज पे यहाँ पे ज़्यादातर यूजर्स आते हैं. इट इज़ एबल टू इंटेलिजेंटली मैप आउट दीज लोकेशंस विच आर एग्जीक्यूटेड वेरी फ्रीक्वेंटली. और हॉट स्पॉट्स, दे आर हॉट स्पॉट्स ऑफ योर कोड जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन है. तो व्हाट दिस इंजन विल डू इज, it will compile that bytecode into machine code. Aha! Isn't it just so beautiful? It is not even executing our code. The JS engine is doing that, but the other threads which are given by the JS runtime, ठीक है,
वो जो साइड का जो इंजन है वो बैठे बैठे आराम से आपका नोटिस कर रहा है दीज आर हॉटस्पॉट्स, लेट्स ऑप्टिमाइज दैट। उसको मशीन कोड में इट क्रिएटेड दैट बाइट कोड, दैट पर्टिकुलर पूरा का पूरा एप्लीकेशन नहीं 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 नहीं, दैट हॉटस्पॉट का जो कोड था इट कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड एंड replaced that particular byte code with machine code. Now your operations are optimized. You get fast startup speed and you get optimized performances as well. This is not the end of the road. JavaScript engine under the hood might be doing millions of things, but we are not capable enough. We don't have the time right now to go into the very intricate details right now. This is what I told you, still a high level here, because there is however deep you can go into this. Okay, so it might seem like a deep dive, but still it is a high level deep dive. Okay, so again let's very quickly recap. Before even starting executing your code, JavaScript engine will split your code. It will split your code into tokens. What are tokens? Cons, let, variables, functions. Create an abstract syntax tree, a lightweight abstract syntax tree. The V8 engine will take this AST, and transform into an ignition bytecode. What is an ignition bytecode? An intermediary step. It is not the source code, it is not the machine code. बीच में कहीं है bytecode है. What to do now? Start executing it. The program has now started executing. There is a third player. There's a different player who's like, acha, program has started, now let me optimize it. It is seeing these are the spots, these are the locations where your code is being run very frequently. Let me generate the machine code for it and swap the hotspots bytecode with machine code. Isn't it so beautiful? क्या complex था? What was complex in that? It took me a good amount of time to compile my information. Oh my god. To compile this information that I gathered, because I've been learning JavaScript for some time now, but starting में it was not very convenient to get one source of information कि भाई सच में यही हो रहा है. It took a lot of time, lot of sources, यहाँ से पूछ के वहाँ से पूछ के, that I was able to finally pack or condense my information into this video and give it to you all. Phase 3 optimization में let's as of so far we've been working with compact unoptimized, intelligent engine, hotspots. So the engine calls on the optimizing compiler, turbofan और crankshift. यही है वो third party जो करता है. Third party का मतलब run time देता है to produce specialized faster machine code for those hotspots. This is different for your JS thread. Let's see this diagram. Forget this EST, ये गलत है, यहाँ पे बाइट कोड होगा. It is यहाँ पर आपका execution JS thread कर रही है, but ये अलग है. These are special threads which we can't access from the code. You can't access these threads. ये क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली आपके कोड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. Once this optimized compiler is done, the JS once this optimized compiler is done, the JS engine replaces the ignition bytecode or intermediate representation with the shiny new highly optimized machine code, and all of this is taking place while your program is being run. While your programming is being run. That is why the term just-in-time compilation. It is not ahead of time compilation. What is ahead of time compilation? Run करने से पहले you create a machine code file like your compiled languages. It is ahead of time compilation. It is just-in-time compilation. Is it so beautiful? So one clap for all the Node.js developers. Like wow 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 wow. No. मजा आ गया. I had a great time explaining this. Hope you guys had a great time learning about this. The next topic is, where is the code executed? Kahan? It's a relatively shorter topic. But where is the code executed? Kahan? ये सब कहानी चल का रही है. Where is it all going on? So did I talk about call stacks and heaps? I didn't think I did. So let's talk about where the code is being executed. Okay, let's take one more deep breath, absorb all the information that we just got.
एंड लेट्स नाउ मूव टू अ सिंपलर टॉपिक. अगर आप लोगों ने ये पार्ट डाइजेस्ट कर लिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल. ओके, सो मैंने बोला कि द जावास्क्रिप्ट रन टाइम हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द JS इंजन, द टर्बोफैन, थिंग्स लाइक दैट, some web APIs the browser provides. It's a ecosystem. Okay, it comes with a lot of things. Just like that, JS engine itself comes bundled with a lot of things. Two things primarily. The JS engine is itself bundled with a few things. What are those things? The call stack and the heap. Very simple concept. भाई बहुत ही simple concept है. Heap is the place where your application's data lives. Simple as that. दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है. Stack is an formally unstructured pool of memory. It's an unstructured pool of memory where your application's reference type lives. Reference types क्या है? It's another jargon. It's just your objects, non-primitive data types, objects, arrays, functions. Begin, blah blah blah. All those are living in the heap. Where are the primitive data types living? In the stack. But is the stack only for that? Only to store primitive data types? No. The call stack is a data structure. The call stack is a data structure which actually executes your program with the help of a execution context. I know you have not heard about execution context. धीरे धीरे डाइजेस्ट करो, ठीक है. The JS engine comes bundled with two things, a heap and a call stack. The heap is an unstructured pool of memory where your application's data lives. What data? Non-primitive data, reference types, objects, arrays, functions, blah blah blah. What is the call stack? Your primitive data types like strings, numbers, booleans, undefined, null, symbol are living in the call stack, and the call stack is also responsible. The main responsibility of call stack is to actually execute your JS program with the help of something known as execution context. Before moving into execution context, let's take another break. Let's take another break, bro. खुश रहने का bros. इतने सारे कॉपीराइट एक साथ आएंगे ना इस वीडियो पे. We do it for the community, we do it for the fam, we don't do it for the money. We don't do it for the money, we do it for the knowledge and have some fun. चलो ओके. देयर इज अ ग्रेट पर्सन जिसने एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट को खोल दिया है, ठीक है. लेट्स डायरेक्टली सी हिज आर्टिकल. उसके आर्टिकल को देख करके आई विल बी ब्रेकिंग इट डाउन टू यू गाइस. बिफोर सीइंग दैट आर्टिकल मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है. हाउ डू आई से सो द इतना मैंने बताया था कि द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड in the call stack with the help of execution context. What is the execution context? It is just an environment inside the call stack. It is just an environment inside the call stack where your code execution is taking place. Simple as that. एक environment है. JavaScript क्या करता है? आपको आपके कोड को लेकर encapsulate कर देता है और एक environment बनाता है, और इसी environment के अंदर सारा खेल चल रहा है. लिटरली खेल चल रहा है, ठीक है. लेट्स सी द आर्टिकल फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड. we'll not get into scope chain and stuff like that because it will just confuse you, ठीक है. This is your call stack. It's empty right now. It's a data structure, first in last out. I hope you guys know what a data structure is.
डेटा स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक रैपर है जिसकी हेल्प से वो एग्जीक्यूट करेगा। सो व्हाट हैपेंस इज द जावास्क्रिप्ट इंजन फर्स्ट रन्स द ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू लिंक आवर प्रीवियस नॉलेज एंड कंबाइन इट विद द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, बिफोर इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज रन, before even a single line of code is done, the JavaScript does what? It parses your code. It parses your code. So when a global execution context is formed, when this wrapper is formed, a couple of things are being done. A couple of things are being done. ये रैपर जब बना तो JS इंजन क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल parsing through your code, creating an abstract syntax tree, doing some hoisting, है ना, it's doing those things. So there are two things in the execution context. First part is JavaScript will create an abstract syntax tree. It might even have created it, the complete picture. It might have created, it might not have created. This is not exactly determinable. मैं थोड़ा लो लेवल जाके बता रहा हूँ कितना ज़्यादा AST बन चुका है अब तक. इट इज़ नॉट, वी कांट पिन पॉइंट, बट इन द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वी कैन से हाँ ग्लोबली मोटा मोटी एक पार्सिंग हो चुकी है, एक सिंटैक्स ट्री बन चुका है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट हो गई है, फंक्शंस डिफाइन हो गए हैं, चीज़ें होइस्ट हो गई हैं. होइस्ट नहीं पता, लास्ट लेक्चर देखो, गिविंग सच मास्टर जी वाइब्स. चीज़ें होइस्ट हो गई हैं, वेरिएबल्स पता पड़ गए कौन से, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन गया है. दिस इज द फर्स्ट फेज. व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? AST बाइट कोड एग्जीक्यूट. सेकेंड कोड इज कोड एग्जीक्यूशन. फर्स्ट फेज इज मेमोरी वाला पार्ट, फिगरिंग आउट द मेमोरी. सेकेंड पार्ट इज कोड एग्जीक्यूशन. ग्लोबली आपका पता पड़ गया कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये फंक्शंस हैं. अब कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करना शुरू करो. कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? अंदर V8 इंजन में C++ रूटीन्स, दे आर एग्जीक्यूटिंग. AST बन गया है, मेमोरी फेज कंप्लीट, कोड एग्जीक्यूशन फेज में आ गए हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है. वी एनकाउंटर अ लाइन x=10 डन. वी एनकाउंटर अ लाइन फंक्शन, इट्स अ फंक्शन. सो फंक्शन के लिए एक अ न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल बी क्रिएटेड. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. Deep breathe. A global execution context and a function execution context. The global execution context created as soon as we run the code. Before running the code, what it will do? Create a global execution context. Memory phase में abstract syntax tree, पट क्या memory है क्या नहीं है, बन गया byte code, start executing line by line, है ना. अब globally में तो function invocations भी होती हैं. As soon as there is a function invocation, create a function execution context on top of the global execution, which will follow the exact same steps. It will have a memory creation phase, जहाँ पर function के अंदर जितनी भी variables, values वगैरह हैं उसके लिए memory allot होगी. As soon as it is done, it will start executing the code line by line, and this will continue until all of your logic is done. मुश्किल था क्या? नहीं ना. Let's just see it. We have a call stack. For example, this is the code. This has functions, function invocation hai, some variables are there, functions, blah 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 blah. When we run the code, run होने से पहले, run होते as soon as you hit enter the command, आपने node index.js hit कर दिया. What will happen? Tell me. AST बनेगा, कहाँ बनेगा? कॉल स्टैक के अंदर बनेगा. कॉल स्टैक के अंदर कहाँ बनेगा? एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा जहाँ पर AST बनना शुरू होगा. मेमोरी क्रिएशन फेज में इट विल होइस्ट डू एवरीथिंग एंड देन इट विल हैव अ कोड एग्जीक्यूशन वाला. मेमोरी का अलग है, कोड का अलग है. इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन. ठीक है, कॉल स्टैक में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया. मेमोरी में इट हैज ऊपर से डिफाइंड कि दीज आर द थिंग्स एंड नाउ द कोड. आई टोल्ड यू ऑल कि AST ना लाइट वेट होता है, एक बार पूरा नहीं बनता. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस. ग्रीटिंग्स आया. ग्रीटिंग्स तो एक फंक्शन है, तो इसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना दो ना भाई.
सी इसके ऊपर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया जिसमें वापस सेम चीज़ रिपीट होगी. एक मेमोरी एलोकेशन फेज होगा जिसे क्रिएशन फेज कहते हैं एंड एक एग्जीक्यूशन फेज होगा. बिकॉज इस फंक्शन में कुछ एक्चुअली मेमोरी है नहीं, इट इज जस्ट रिटर्निंग इट. So there is no memory needed. It will just execute. It will execute the greetings वाला thing, and as soon as it is executed, it will pop off. Pop, हटो यहाँ से. Pop हो गया, हटो यहाँ से. सिर्फ ये बचा है. Now this executes, ठीक है? This executes. This is another function. What will happen? What will happen? Another function execution context will be made. वाह 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 वाह. Very simple. आ गया. सेम मेमोरी इसका भी एक मेमोरी एग्जीक्यूशन मेमोरी क्रिएशन फेज या क्या फेज है वो क्रिएशन फेज होगा जहाँ पे मेमोरी अलॉट होगी. उसके अंदर मेमोरी अलॉट होने के बाद कोड होएगा. सो अ क्वेश्चन दैट नेचुरली कम्स इज क्या हर बार AST बनेगा? देखो क्या है ना यार, AST जो बनता है इट हैज़ अ लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स. मे बी द इंजन इज मेकिंग ASTs फॉर अ लॉट ऑफ फंक्शंस बिफोर देयर कॉन्टेक्स्ट इज इवन क्रिएटेड. एंड जैसे मान लो कि आपका फंक्शन, ट्राई टू स्टे विद मी, let me just give you an example right here. It has three functions, ठीक है? It has 3 functions. जब आपका कोड पास होना शुरू हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, क्रिएशन फेज में AST बन गया. हो सकता है कि आपके उस समय इंजन ने इसका भी AST बना लिया हो, इसका भी AST बना लिया हो. डिपेंड करता है, वी कांट से. बट एक बात पक्की है, जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तो अगर इसका AST बना हुआ होगा तो वो इंजन से मांग लेगा, पुल कर लेगा. नहीं बना होगा तो बन जाएगा, है ना? सिंपल. अगर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब बन रहा था तभी इंजन ने अगर AST बना लिए थे तो वो इंजन से मांग लेगा, भैया इनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, मुझे इनका AST दो. बना हुआ है तो ले लेगा, नहीं बना हुआ है तो बना लेगा. काम ही इंजन का ये है भाई, 2-3 चीज़ें आती हैं इंजन को. और एंड दिस विल गो ऑन अंटिल द लास्ट लाइन. सो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल स्टे अंटिल द लास्ट, एंड अंटिल अनलेस योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट इट विल स्टे देयर. And any functions that come in between will get on top of the stack, execute, pop off. If it has some internal functions call inside it, एक और ऊपर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा. उसके अंदर मेमोरी फेज होगा जहाँ पे या तो AST क्रिएट होगा या फिर फेच कर लेगा वो, फिर वापस से कोड एग्जीक्यूट होगा. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल आइटरेटिव लूप दैट गोज ऑन, नथिंग टू फैंसी. देयर आर सम थिंग्स लाइक स्कोप चेन एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वी विल गेट इन टू दैट इन लेटर वीडियोज. आई थिंक दिस वीडियो हैज गॉटन अ लिटिल लॉन्गर, बट आई एन्जॉयड इट अ लॉट. I enjoyed this video a lot. You guys will not believe it, but जितना भी टाइम मेरे को जावास्क्रिप्ट समझने में लगा, I tried to condense all of it into this video. At least the execution वाला part. There are a lot of things in JavaScript which मैं नहीं कर सकता एक वीडियो में. But ये जो running वाला part था, I tried to condense it into one video. And since it's the end of a video, तो एक outro तो बनता है. I think you guys enjoyed. Hopefully I did. See you in the next one. अगली बार हम स्कोप्स के बारे में बात कर रहे होंगे, लेक्सिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड मच मोर. कुछ कमेंट कर दो किसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात कर लेंगे, तुम्हारे बारे में बात कर लेंगे, कुछ भी बात कर लेंगे भाई. आई एम अ पार्ट टाइम yapper, a part time rapper, but full time YouTuber, subscriber, or whatever it is. Blah blah blah. Hope you guys enjoyed. Stay tuned. Thank you so much for listening.